जय श्री कृष्ण। स्वागत है तमारू श्रीकी लाइफ चेनल में। आज आप कोबीनी पूरी बनावीए, खूब सरस बने छे। तो सौ प्रथम आप कोबीना नाना नाना टुकड़ा करी अने तेने मिक्सरना जार में पीसी लेवानी छे। तेनी पेस्ट बनावी लेवानी छे। ए पेस्ट बनी जाए एटले आपणे एक वासण में लई लेवानी छे अने तेनी अंदर आपणे मसालो करवानो छे। तेनी अंदर आपणे नीमक, हळदर पाउडर, लाल मरचुं पाउडर, धाणा जीरुं पाउडर, गरम मसालो अने 2 चमची जेटलो आपणे चणानो लोट एड करीशुं अने तेनी अंदर आपणे घऊंनो लोट एड करी देशुं अने आ बधुं मिश्रण सरस मिक्स करी अने आपणे तेनो लोट बांधी लेशुं। आनी ज अंदर आपणे लोट बांधवानो छे। आनी अंदर आपणे पाणी एड करवानुं नथी। तो सरसथी लोट बंधाई जाए एटले आपणे तेलवाळो हाथ करी देवानो छे अने तेनी आपणे पूरीओ वणी अने तेने सरसथी तળી लेवानी छे। तो આપણે સાદી પૂરી તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ, પણ આવી રીતે બનાવવાથી સ્વાદમાં ખૂબ સારી લાગે છે। આની અંદર તમે ગાજર, ટમેટા, બીજી કોઈ વસ્તુ એડ કરવા ઈચ્છતા હોય તો એ પણ કરી શકો છો। બાળકોને આપણે આવી રીતે શાકભાજી પણ ખવડાવી શકીએ છીએ। તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને આજની મારી આ રેસીપી કેવી લાગી એ પણ જણાવજો।